Morning, everyone. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. In a previous class, Good morning, ma'am. good morning, beta. In a previous class, we have already started with lesson number 2 of history, that is New Kings and Kingdoms. And we have just started the introduction, in which I had shown many new dynasties which emerged after the 7th century. And these dynasties, few dynasties we have marked, the major kingdoms, or we can say important kingdoms, like Rashtrakutas. I had asked you, have you marked with the pencil in the book, in the map? Yes, ma'am. Okay, you have marked Rashtrakutas, you have marked Gurjar Pratiharas, then what else? Ma'am, Palas and Cholas. Yes, Ma'am, Palas, Cholas, Chamannas. And ma'am, Palas, and Gujrara. Gurjar Ma'am, your voice is not coming clear. Gujrara Pratikar. Gurjar Pratiharas, Gurjar Yes. Pratiharas. And Chairmans were also called as, Chairmans were also Ma'am, Chauhan. Chauhans. Good. So all these names you are familiar. In our last class, we have discussed about all these. These were the major kingdoms, main kingdoms, which came in the 7th century. Clear? Then Yes, ma'am. we have to start with the emergence of new dynasties. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. So big landlords or warrior chiefs were there in the 7th century in the subcontinent. In the subcontinent means which subcontinent we are talking about? Indian subcontinent. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Yes. So these Yes, ma'am. yes, these warrior chiefs or big landlords were called as what? These warrior chiefs were called as Ma'am, Samantas. Samantas. These were called as Samantas. Yes. Ma'am, your voice is not coming clearly. Hello. No, ma'am, it is coming clearly. Yes, ma'am. It is coming. Beta, my voice is clear. You check your device, your audio in your device. Please check it, beta. Okay. Now these subordinates of the king. These were the subordinates of the kings. The one who were the people who were subordinates, who were working under the king. They were also called as samantas, and they were expected to bring gifts for the king or overlords, be present at their courts and provide them with military support. So, what was the work of samantas? Here it is the giving the work of the samantas. What was the work of the samantas? Ma'am, they were expected to bring gifts for the king. Yes, bring the overlord. They provide them for military. present military support. And ma'am, they provide them with the military support. first to bring the gifts for the kings, second to present at the courts, And provide them military support. and Ma'am, Samantha's work is there to bring gifts for their kings and provide them with military support. yes, better yes. But apart from bringing the gifts and providing the military support, one more work was there to be present at the Ma'am, present at their court. court. Yes, राजा के दरबार में हाजिर रहना, ये भी उनका काम था सामंताज का. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. मैम, सामांतास के आगे क्या लिखा है मैम? Subordinates. Samantas were the subordinates. Subordinates means जो राजा के अंडर में काम करते थे, जैसा राजा कहते थे वैसा वो काम करते थे. They were the subordinates and were also called as samantas. Clear? As samantas gained power and wealth, they declared themselves to be महासामंता. जैसे जैसे सामंता के पास ज्यादा पावर आ गया, ज्यादा वेल्थ आ गया, तो क्या हो गया, उन्होंने अपने आप को क्या बताना शुरू कर दिया. They declared Mahasamanta. Mahasamanta. yes, from now Samantha to Mahasamantha they were declaring themselves, because now they are becoming more powerful and more wealthy people. ठीक है ना. And Mahamandaleshwara, Mahasamantha and Mahamandaleshwara
were also the names which Samanta used to declare themselves. सामंता ने अपने आप को महासामंता और महामंडलेश्वर के रूप में डिक्लेयर कर दिया था, बिकॉज नाउ दे वर मोर पावरफुल एंड देन दे वर हैविंग मोर वेल्थ, बिकॉज दे वर गिविंग द सप्लाइंग द व्हाट मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग ऑल्सो, है ना, दे वर प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ किंग ऑल्सो. So the great lord of circle or region, what does the word Mahamandaleshwara means? What was the word? Ma'am, the great lord of a circle or region. Yes, the Mahamandaleshwara. Mandal means a particular region. Maha means bada. So it bada means lord. The lord of a particular region. Clear? That is called as Mahamandaleshwara. Sometimes they asserted their independence from their overlords. अब कभी कभी वो क्या करते थे, अपना इंडिपेंडेंस, अपने आप को ओवरलॉर्डशिप से फ्री रख देते थे, इंडिपेंडेंट कर देते थे, स्वतंत्र कर देते थे. अब वो क्या करते थे, सोचते थे हमारे पास ज्यादा पावर आ गया, हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया, तो अब हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे. क्लियर दिस मच? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now one incident is given. You can have a look here. One such instance was that of the Rashtrakutas in Deccan. Now one such instance was there with the Rashtrakuta in Deccan. Now Rashtrakuta, who was Rashtrakuta? Rashtrakutas were the subordinates to Karnataka. Clear? Rashtrakuta कौन थे? Rashtrakuta were subordinates to Chalukya. Subordinates to हाँ, Chalukyas of Karnataka. चालुक्य कहाँ पर रूल करते थे? कर्नाटका में. Karnataka. और जो सबॉर्डिनेट राष्ट्रपिता सबॉर्डिनेट थे, मीन्स सबॉर्डिनेट मीन्स अनदर वर्ड फॉर सबॉर्डिनेट वी हैव हेard. I'm doing work in under of king. वन Ma'am, Samantas. समानतास, है ना. Ma'am, Samantha. Subordinate means also samantas. You have written a subordinate or samantas. So the Rashtrakutas were samantas. They were working under which ruler? Chalukyas, whose rule was in Karnataka. Clear? Now in the mid Yes, ma'am. century, Danti Durga, a Rashtrakuta chief. Underline this. Underline this. Who was that? Hello, Praveen. Mute yourself. Praveen, mute yourself. So who was Danti Durga? Danti Durga was a Rashtrakuta chief. राष्ट्रकूटा का जो मेन लीडर था वो दांती दुर्गा था. ठीक है, राष्ट्रकूटा चीफ मीन्स मेन लीडर ऑफ राष्ट्रकूटा समांतास, वो था दांती दुर्गा. He overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hirangarbha, literally the golden womb. अब दांती दुर्गा ने क्या करा? दांती दुर्गा जो राष्ट्रकूटा चीफ था, who was working under, first previously Rashtrakutas were working under the Chalukyas. Now this Danti Durga, who was the leader of Rashtrakuta, he overthrew his what? Overlordship, है ना. राष्ट्रकूटा के अंडर काम करना उन्होंने, Hiranyagarbha. हाँ, राष्ट्रकूटा ने चालुक्य के अंडर काम करना Haryana Garba. क्यों मना कर दिया? By performing a ritual called Hirangarbha. Now what is Hirangarbha? What is Hirangarbha? The golden worm. The golden worm. The golden worm. Hirangarbha, And the golden worm. Hirangarbha, Golden Worm. Hirangarbha is a ritual. एक तरीके की सेरेमनी है. Hirangarbha is a ritual Ritual. Ceremony ritual. which means golden womb. Which means golden Golden Worm. मतलब, Golden worm. यस, हिरण्यगर्भा का मतलब होता है गोल्डन वूम. क्लियर? और ये एक तरह की रिचुअल थी जो कि कोई भी वो इंडिविजुअल ये परफॉर्म करता था. रिचुअल वो एक तरीके से क्या माना जाता था कि उसका रीबर्थ हो गया है. उसका किसमें रीबर्थ हो गया है? एज अ क्षत्रिय. उसका रीबर्थ हो गया किससे? एज अ क्षत्रिय. When this ritual was performed with the help of Brahmins, and this Hiranyagarbha ritual was performed with the help of who? Brahmins. Brahman. कोई Brahman. यस, कोई भी पूजा पाठ किसके अकॉर्डिंग होती थी? पुजारियों किसके according? Brahmans. Brahmans. Brahmins.
अरे यार मम्मी कौन होता? मम्मी मॉम सा एक जाति जो कहीं करती जो सिर्फ नट्स खाता बे मम्मी Everybody, please keep your audio off. Mute yourself. You are disturbing the whole class. Keep your audio off, everyone. Those who want to give the response, they only will speak out and then again mute yourself. Okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम Fine. Ma'am. Yes, ma'am. Okay. When this ritual was performed with the help of Brahmins, जब ये ritual, हिरण्यगर्भ ritual, Brahmins की help से perform किया जाता था, then it was thought, तो ऐसे सोचा जाता था कि this lead to rebirth of the sacrificer. ऐसे सोचा समझा जाता था कि जिसने भी ये रिचुअल परफॉर्म की है उसका एक तरीके से रीबर्थ हो गया, पुनर्जन्म हो गया है. किसमें पुनर्जन्म हो गया है? एज अ क्षत्रिय. एंड हु वाज क्षत्रिय? द वॉरियर क्लास, राजपूत, है ना? इवन इफ ही वाज नॉट Yes, ma'am. बाय बर्थ, अगर उसका बर्थ क्षत्रिय क्लास में नहीं हुआ है, बट अगर उसने हिरण्यगर्भ रिचुअल परफॉर्म किया है ब्राह्मण की हेल्प से, तो इसका मतलब समझा जाता था कि उसका बर्थ क्या हो गया है? पुनर्जन्म हो गया उसका. और अब कौन सी कास्ट में हो गया उसका? क्षत्रिय के रूप में. क्लियर? क्लियर दिस मच? Kshatriya class. Ma'am. यस मैम Yes, ma'am. Kshatriya caste. In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. अब दूसरे केसेस में क्या था? जो बड़ी बड़ी फैमिलीज में, रॉयल फैमिलीज के जो कुछ लोग थे, उन्होंने अपना खुद का किंगडम स्टैब्लिश कर दिया खुद की मिलिट्री पावर से. मिलिट्री स्किल मीन्स मिलिट्री पावर से खुद का किंगडम स्टैब्लिश कर दिया. तो कुछ ने कैसे स्टैब्लिश करा? बाय परफॉर्मिंग द हिरण्यगर्भ, एंड सम established the kingdoms through their military skills, and they were belonging to royal families. Clear? For instance, the Kadamba Mayurashram, and the Gurjar Pratihara Harichandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing their kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively. That means कुछ तो ये हिरण्यगर्भ करके रिचुअल परफॉर्म करके क्षत्रिय कास्ट अपना लेते थे, एंड दे यूज्ड टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम. कुछ लोग अपने मिलिट्री पावर से अपना किंगडम एस्टैब्लिश कर देते थे. एग्जाम्पल दिया है कादम्बा मयूराश्रम का. कादम्बरा मयूराश्रम एंड द गुर्जर प्रतिहारा का जो हरिचंद्र थे, उन लोगों ने, ये दोनों क्या थे? बाय कास्ट ब्राह्मण्स थे. कादम्बा मयूराश्रम एंड प्रतिहारा हरिचंद्र वर द ब्राह्मण्स. दे गेव अप देयर, Brahmins. हाँ, they gave up their traditional professions. उन्होंने अपना traditional profession दे दिया and they established the kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. Karnataka and Rajasthan respectively means कादम्बा मयूराश्रम ने अपना किंगडम कर्नाटक में एस्टैब्लिश कर दिया, और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ने अपना एस्टैब्लिश कहाँ करा किंगडम? राजस्थान में. राजस्थान क्लियर? तो ये बाय बर्थ क्या थे? ब्राह्मण्स थे, बट उन्होंने ब्राह्मण प्रोफेशन को त्याग दिया और उन्होंने अपना अब आर्म्स ले लिए, हाथ में वॉर मींस वेपन्स ले लिए, आर्म्स एम्यूनिशन ले लिए और अपना खुद का किंगडम स्टैब्लिश कर दिया कर्नाटक और राजस्थान में. आई होप क्लियर, इट इज क्लियर. यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट? Ma'am. नो मैम Okay, fine. We'll continue now. Administration No, ma'am. यस मैम administration in the kingdoms. Now the administration in the kingdoms. Now first, before continuing with this topic, we'll see the figure 1, wall relief from cave 15 Ellora. Now this is the wall relief, means a painting. Ma'am, it is in Ellora caves. Yes, it is in Ellora. Ajanta. Yes, showing Vishnu as Narsimha and man lion. विष्णु को इस तरीके से नरसिम्हा और मैन लायन के साथ दिखाया गया है. इट इज द वर्क ऑफ राष्ट्रकूटा पीरियड. ये कब बनाया गया था? राष्ट्रकूटा जब रूलर्स थे तब बनाया गया था. क्लियर?
Yes, Clear, beta? yes. This is a wall relief. Yes, ma'am. Wall relief means wall painting. This is. Now, administration in the kingdoms. Where many of these new kings adopted high-sounding titles. Now, when these new kingdoms were established, किसी भी तरह चाहे रिचुअल परफॉर्म करके, चाहे अपना प्रोफेशन त्याग करके, और वो अपना किंगडम स्टैब्लिश करा, और थ्रू देयर मिलिट्री पावर, किसी भी रूप में जब वो एडमिनिस्ट्रेशन और किंगडम स्टैब्लिश करा, देन दे अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स. अब कौन से टाइटल्स इन्होंने ले लिए? महाराजा धीराज. महाराजा धीराज. महाराजा धीराज मीन्स ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग्स, मीन्स राजाओं का राजा, महाराजा. क्लियर? महाराजा धीराज. दिस वॉज one of the high titles which these new kings had adopted. Clear? Yes, ma'am. Another title, Tribhuvan Chakravarti. Another title was Tribhuvan Chakravarti. Chakravarti. Lord of three worlds. Yes, Tribhuvan, as the name indicates, three means three. Try, Lord of three worlds. Bhuvan means world. So, Tribhuvan or Chakravarti means four worlds. Lord of three worlds. Three worlds and so on. So these types of titles were adopted by these new kings, these new rulers. Clear? So can anybody now give me the two new titles which the kings had adopted? Maharaja Dhiraj Chakravarti. Very good. Maharaja Dhiraj and Tribhuvana Chakravarti. What does the Dhiraj means? What is the word Maharaja Dhiraj? Ma'am, great king. Ma'am, great king, overlord of kings. Ma'am, great king, overlord Ma'am, of राजाओं के kings. राजा. Ma'am, overlord of kings. Yes. And Tribhuvana means? Ma'am, Ma'am, lord of Lord of three three worlds. Okay. Lord of Lords. Yes. Now mute yourself, everyone, so that we can continue the lesson. Okay. However, in spite of such claims, they often shared power with their samantas. Now, such new titles, big titles they had adopted, such big kingdoms they had established, but then also they shared the power with their samantas. अपने subordinates से के साथ वो मिल करके काम करते थे, as well as with associations of peasants, traders and Brahmins. Clear? So these new kings were sharing the powers with whom? Were sharing the Ma'am, Brahman traders. yes, Samant. Peasants, traders, and Brahmins. Yes, Samantas, peasants, traders, and Brahmins. Now, Samantas are the subordinates. Peasants are the farmers. Traders are the Farmers. Peasants, traders, and Brahmins. okay. Peasants are the farmers. Clear? Yes, ma'am. Traders are the businessmen. Clear? Brahmins are the pujari, holy people. Ma'am, Pandit. Pandit, please. Ma'am, Pujari. Yes. So these kings used to share their power with all these people also. Clear? So together they shared their power and they used to rule the kingdom. In each of these states, resources were obtained from the producers. अब हर स्टेट में जो रिसोर्सेज थे, जो सामान आता था, वो किससे? प्रोड्यूसर्स से आता था. वो उनको बेनिफिट कहाँ से मिलता था? Producers. And who were the producers at that time? Producers who were Ma'am, peasants. Ma'am, peasants. peasants are the producers. As I told you, who are the peasants? Farmers. Ma'am, kisan. Yes. Farmers. So farmers are the producers, even the cattle keepers who domesticate the animals. Artisans. Who are the artisans? Ma'am, art person. Or completed. Hello. Who are artisans? Ma'am, art person. Yes, people which are indulge in one particular art activity. कोई अच्छा कारीगर बोलते हैं ना कि इस चीज में कारपेट Yes, ma'am. अच्छा है या मेटल मेकिंग में बहुत अच्छा है. So artisans
and who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produce. Now these kings used to persuade means force, or compelled means they used force or asked compulsory. It was compulsory for the peasants, cattle keepers and artisans to give, surrender means to give a part of whatever they produce to the state, to the king. Clear? Clear this much? So, Yes, ma'am. so Yes, ma'am. Yes, ma'am. राजा Yes. को राजा को फाइनेंस कहाँ से मिलता था? प्रोड्यूसर्स से. Who were the producers? Peasants, cattle keepers and artisans. Clear? They persuaded. Yes, ma'am. These kings officials used to persuade, प्रेशराइज करते थे, फोर्स करते थे टू सरेंडर के कुछ पार्ट अपना प्रोड्यूस का उनको किंग को देना पड़ना जरूरी है, देना जरूरी है. क्लियर? गर्वित, आई थिंक यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम. गर्वित, यू वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा? गर्वित उपाध्याय, you want to listen to the lesson explanation of my this lesson, or you want to just बस यार खुद तो इधर मैं बोल रहा हूँ मम्मी नहीं इधर से गाँव तक जादू करा आ रहे हैं. उत्कर्ष, mute yourself बेटा. मम्मी मम्मी ये देखो कल मैं गलती से बाहर आ गया था इनके बेटे के. Sometimes these were claimed as rent. Rent means किराया. इनसे क्या करके ये प्रोड्यूस मांगते थे कि आपको यहाँ पर, आप हमारे किंगडम में रह रहे हो तो यू हैव टू पे द रेंट, आपको यहाँ पर किराया देना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई दे वर फोर्स्ड, persuaded means they were forced to give the part of whatever they had produced due to the lord who asserted that he owned the land. क्योंकि वो उनको ये रहता था कि हमारी ये भूमि, लैंड हमारी है, इतना रीजन हमारा है, एंड इफ यू आर लिविंग हियर, इफ यू आर डूइंग द वर्क ओवर हियर, you have to surrender, you have to give the part of whatever you are producing to the state Ma'am, you have to as a rent, किराए के तौर पर. Clear? Now revenue was also collected from traders. Now traders also used to pay the revenue tax. बिजनेस के लिए उनको भी टैक्स पे करना पड़ता था. I hope it is clear till here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, yes. And what is the meaning of trust? What is the meaning of? Trust. बेटा, I'm not able to follow. क्या पूछ रहा? Ma'am, in artisan's line. Artisans Often. Ma'am, No, ma'am. Often after. Often के बाद में जो. persuaded. Who were all should. persuaded? Persuaded means forced और pressurized. जबरदस्ती उनसे उनको कहा जाता था कि आपको देना ही देना है, आपने जो कुछ भी काम किया है उसका जो प्रॉफिट हुआ वो स्टेट को देना ही देना है. क्लियर? Persuaded means compelled or forced, pressurized. Now, in this way, we can say that 400 taxes, different taxes were there. The inscriptions of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. Now, the inscriptions, what are the inscriptions? The sources of history. The sources of history. Inscriptions are Yes, ma'am. from where we get Yes. knowledge about our history. Ma'am, it is written Yes. on iron. Ma'am, it is written on palm Ma'am, leaf. even the On stones, walls, pillars, है ना? Inscriptions, Yes, ma'am. pillars, pillars पे. Ma'am, they are also written on the palm leaf. Palm leaves are the manuscripts बेटा. Inscriptions भी Ma'am, leaf पे तो मैम manuscript Ma'am, ये- होती थी. ma'am inscription तो stones पे लिखते थे ना. stones Yes, ma'am. पे, iron pillars पे, मैम hard जगह पर. hard जगह पे. उनको inscription means inscribed, engrave करके, तीखी चीज से लिखा जाता था, engrave करके लिखा जाता था ना. So the inscriptions of Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to about 400 terms of different kind of taxes. अब चोला के inscriptions show करते हैं कि कितने different types of taxes the people had to pay. 400 types of different. 400. Most frequently mentioned tax is Veti.
वैटी इज द नेम ऑफ द टैक्स. एक टैक्स क्या था? वैटी. टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर. वैटी जो एक टैक्स था वो एक फोर्स्ड लेबर के रूप में लिया जाता था. क्लियर? कादमाई. कादमाई इज अनदर टैक्स which was in the form of land revenue. भूमि के ऊपर टैक्स लगाया गया था. There was also taxes on thatching the house. Means अगर आप अपने घर के ऊपर रूफ लगा रहे हो, thatch means रूफ लगा रहे हो सूखी घास का, तो उसका भी आपको पे करना पड़ेगा टैक्स. अगर आपने कोई सीढ़ी काम में ली है, लैडर काम में लिया है पाम ट्रीज पे चढ़ने के लिए, तो उस लैडर के लिए भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. सो these types of many taxes they are to pay. Utkarsh, mute yourself better. No need to unmute yourself. So many types of, even to have the part in the family property, they had to pay the tax. So many taxes, means for little bit things also they had to pay the taxes. So 400 types of taxes they had to pay. Now these resources were used to finance the king's establishment. अब जो ये resources in the form of tax was there, it was taken by the king in the for the use of the king's establishment, ताकि king का power establish, kingdom establish रह सके. And for the construction of the temples and forts, राजा के महल, राजा का टेम्पल, कंस्ट्रक्शन टेम्पल्स हो सके, इसीलिए ये जो रिसोर्सेज थे, ये जो टैक्सेस थे, ये कलेक्ट किया जाता था. दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स. नाउ दीज टैक्सेस वर ऑल्सो कलेक्टेड टू फाइट द वॉर्स. राजा कोई लड़ाई लड़ने जाता था तो उसकी मिलिट्री की देखने के लिए, देखभाल के लिए क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेपन्स, आर्म्स, एम्युनिशन के लिए पैसा चाहिए होता था, फाइनेंस चाहिए होता था. तो उसके लिए भी ये रिसोर्सेज, ये टैक्सेस कलेक्ट जो करते थे वो काम में लेते थे मनी वहां से. विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू एक्विजिशन ऑफ वेल्थ. एक्विजिशन ऑफ वेल्थ मीन्स एक तरीके से अच्छा खासा फाइनेंस राजा के पास तिजोरी में इकट्ठा हो जाता था ये सब टैक्स इकट्ठा करने से. एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन फॉर्म ऑफ प्लंडर. कभी कभी क्या करते थे वो एक दूसरी जगह पे, दूसरी टेरिटरीज पे जाकर के लड़ाई झगड़ा करके और उस टेरिटरी को अपने अंडर में कर लेते थे. प्लंडर मीन्स लूटपाट करके. कभी कभी राजा लोग लूटपाट करके भी अपने वेल्थ को बढ़ाते थे. ठीक है ना? वहां का सारा, जब आप जीत जाओगे, कोई राजा जीत जाता था तो उस जीता हुआ जो राजा था वो सारा उसका क्लेम हो जाता था, जो रीजन उसने जीता है उस पे, चाहे वो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो वेल्थ हो, है ना? तो इन दिस वे दे यूज्ड टू हैव द एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स. जो भी ट्रेड रूट्स थे, जो भी लैंड्स थी, तो वो दूसरे राजा से लड़ाई लड़ करके उसकी टेरिटरीज को भी अपने किंगडम में मिला लेते थे. सो इन दिस वे द किंग यूज्ड टू व्हाट? grow more and more wealth in their kingdom. The functionaries collecting revenue were generally recruited from influential families. और जो ये कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, ये कौन लोग थे? इनको राजा खुद अपॉइंट करता था. एंड दे वर फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज. इन्फ्लुएंशियल मीन्स रॉयल फैमिलीज. एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटरी. और कभी कभी ये पोजीशन हेरिडिटरी मीन्स आफ्टर द फादर द सन विल गो टू कलेक्ट द revenue. And this was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king had these positions. Means राजा के जो close relatives थे, उन्हीं को ये काम राजा सौंप देते थे. कौन सा काम राजा सौंप देते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करने का. Yes. मैम रेवेन्यू कलेक्ट करने का. Revenue और collecting of revenue. and to get the high position in the army also. Army. Army. And this was all hereditary. Heredity means after the father, the son will have the seat. Clear this much, everyone? Yes, ma'am. So I hope till here it is clear. In our next class, Ma'am? Yes, ma'am. beta. Ma'am, I want to ask something. Yes, beta Bhumika. Ma'am, what is the meaning of acquisition of wealth? Acquisition of wealth means wealth collection of wealth. आप किसी अपनी धन संपत्ति इकट्ठा करना, इन हिंदी वी कैन से इकट्ठा करना.
तो वो कैसे इकट्ठा करते थे अपने राजा लोग? वो लूटपाट करके दूसरी टेरिटरी में जाकर के, दूसरे किंगडम्स में जाकर उस रीजन का लूटपाट करते थे और अपने अंदर वो टेरिटरीज, उस टेरिटरी का जो भी खजाना, जो भी लैंड होती थी या ट्रेड रूट्स होती थी, वो अपने अंदर ले लेते थे, अपने किंगडम में मिला लेते थे। एक्विजिशन मीन्स वेल्थ को बढ़ाना, अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाते थे कलेक्ट करके, ठीक है ना? हेलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. ओके Yes, ma'am. Bye, ma'am. ओके, 1 minute. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a Thank you, nice day, ma'am. ma'am. Thank you, Good day, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.